Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. वेलकम टू गंगा एजुकेशन लीज वर्सेस लाइसेंस। आज हम डीकोड करेंगे प्रॉपर्टी लॉ का एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है और फ्रैंकली उतना ही कंफ्यूजिंग भी। अगर आप एलएलबी, एलएलएम या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो बॉस ये कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पर होना ही चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन ईजमेंट्स एक्ट के बारे प्रोविजंस को एकदम सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। सो यू आर परफेक्टली एग्जाम रेडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट एंड लीगल डेफिनेशंस, फिर मेकिंग ऑफ अ लीज अंडर सेक्शन 107, उसके बाद लीज वर्सेस लाइसेंस का कंपैरिजन, एक लैंडमार्क केस लॉ, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और एंड में एक क्विक रिवीजन समरी। ऑलराइट, सेक्शन 1, कॉन्सेप्ट एंड लीगल डेफिनेशंस। प्रॉपर्टी लॉ की हिस्ट्री में ये समझना हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है कि आप किसी को जमीन पर प्रॉपर हक दे रहे हैं या सिर्फ टेम्परेरीली आने की परमिशन। इस डीप लीगल मीनिंग को समझने के लिए हमें दो एंटायरली डिफरेंट एक्ट्स देखने होंगे। सिंपल वर्ड्स में समझे तो सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये कहती है कि लीज में आपको प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट और राइट मिलता है। जब कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देता है तो वो एक फिक्स पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट टेक्निकली ट्रांसफर कर रहा होता है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये एक सॉलिड लीगल राइट है जो ट्रांसफरी यानी लेसी को मिल जाता है। ऑन द फ्लिप साइड, लाइसेंस बिल्कुल अलग कानून में डिफाइंड है। सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882 ये प्रॉपर्टी में कोई भी राइट या इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करता। इट्स लिटरली जस्ट अ परमिशन। इसका मतलब है जो काम बिना इस परमिशन के अनलॉफुल या ट्रेसपैस कहलाता, लाइसेंस सिर्फ उस एक्शन को लॉफुल बना देता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रॉपर्टी पर आपका कोई सॉलिड हक पास नहीं होता। मूविंग टू सेक्शन 2, मेकिंग ऑफ अ लीज अंडर सेक्शन 107। कानूनी तौर पर आखिर एक लीज बनती कैसे है? लेट्स फाइंड आउट। सेक्शन 107 इस प्रोसेस को एकदम क्लियर करता है और इसमें स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं। अगर आपका लीज 1 साल से ज्यादा का है या उसमें ईयरली रेंट फिक्स हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, नो शॉर्टकट्स। अगर लीज 1 साल से कम का है या मंथली बेसिस पर है तब आपके पास ऑप्शंस हैं। या तो आप उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर करवा लीजिए या फिर ओरल अग्रीमेंट के साथ पोजेशन डिलीवर कर दीजिए। और यहां एक बहुत बड़ी एग्जाम टिप है, अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बन रहा है तो इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ पार्टीज। लेसर और लेसी दोनों के सिग्नेचर्स जरूरी हैं स्ट्रिक्टली। सेक्शन 3, लीज वर्सेस लाइसेंस कंपैरिजन। प्रैक्टिकल डिफरेंसेस समझना सबसे क्रूशियल पॉइंट है क्योंकि एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करने पर मिलते हैं। आपको टेक्स्ट बुक्स और प्रॉपर्टी लॉ लिटरेचर में इन दोनों के बीच ऑलमोस्ट 15 एस्टैब्लिश्ड कोर डिफरेंसेस मिल जाएंगे, पर हमें उन सबको ब्लाइंडली रटना नहीं है। वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वाइटल पॉइंट्स जो एक्चुअली रियल लाइफ और कोर्ट्स में मैटर करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां सबसे बड़ा एग्जाम कीवर्ड है एक्सक्लूसिव पोजेशन। लीज में लेसी के पास पूरी तरह कंट्रोल होता है, एक्सक्लूसिव पोजेशन उसके पास आ जाता है, जिसका मतलब है अगर कोई ट्रेसपासर वहां आता है तो लेसी डायरेक्टली उसके खिलाफ कोर्ट एक्शन ले सकता है। लाइसेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां आपके पास कोई एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं है और आप ट्रेसपासर को स्यू नहीं कर सकते। कंट्रोल हमेशा ओनर के पास ही रहता है। ये पॉइंट्स आपके एलएलबी और जुडिशरी एग्जाम्स के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। लीज ट्रांसफरेबल है, इजीली रिवोक नहीं हो सकती, लीगली रजिस्टर होती है और सबसे बड़ी बात, ये हेरिटेबल होती है, यानी लेसी के बाद उसके लीगल हेयर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। लाइसेंस के केस में ये सब नेगेटिव है, नॉट ट्रांसफरेबल, इजीली रिवोकेबल, जनरली नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एंड स्ट्रिक्टली पर्सनल, मतलब डेथ के साथ ही लाइसेंस खत्म। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में कैच ये है कि अग्रीमेंट्स की वर्डिंग इतनी कंफ्यूजिंग हो सकती है कि कोर्ट्स के लिए भी इंटेंट डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 4, लैंडमार्क केस लॉ। कानून सिर्फ किताबों से नहीं चलता, it's shaped in the courtrooms. Let's see how a major conflict between a huge bank and a state government played out. ये प्रॉपर्टी लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ICICI वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैक इन 1999। चलिए इसके फैक्ट्स को एक स्टोरी की तरह देखते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने ICICI को बॉम्बे में जमीन दी। एक 1994 का अग्रीमेंट था जिसके हिसाब से ICICI को 3 साल के अंदर वहां बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी थी। उस अग्रीमेंट के क्लॉज 1 में क्लियरली लिखा था कि जब तक आगे चलकर प्रॉपर लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं होती, ICICI वहां सिर्फ एक बेयर लाइसेंस ही रहेगा, जस्ट बिल्डिंग बनाने के पर्पज से।
डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब हाई कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को लीज ही मान लिया। तो क्या ये सच में लीज थी या सिर्फ एक टेम्पररी लाइसेंस? मैटर पहुंच गया सीधा सुप्रीम कोर्ट। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कोर प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं भाई, हाई कोर्ट यहां गलत था। उन्होंने क्लियर किया कि लीज का एक्चुअल मतलब है प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट देना और जमीन में कोई ना कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर करना। इस पर्टिकुलर केस में आईसीआईसीआई को तो सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का पोजीशन मिला था, उनको जमीन का कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना मिला था। डॉक्यूमेंट ओपनली कह रहा था कि लीज फ्यूचर में बनेगी। सो द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली हेल्ड कि ये स्ट्रिक्टली एक लाइसेंस था, लीज बिल्कुल नहीं। Section 5. Real life examples. Case law से concept तो समझ आ गया होगा, but now let's apply it to everyday situations. देखिए, अगर एक ओनर अपना घर मंथली रेंट पर देता है या आप 1 साल के लिए राइस मिल या कोई अपार्टमेंट फ्लैट रेंट पर लेते हैं, तो वहां एक प्रॉपर लीज क्रिएट होती है, क्योंकि एक्सक्लूसिव पोजेशन आपके हाथ में आ जाता है। पर अब लाइसेंस के एग्जाम्पल्स देखिए। अगर आप किसी होटल या लॉज रूम में रुकते हैं, दैट इज जस्ट अ लाइसेंस, क्योंकि वहां रूम का लीगल पोजेशन होटल अपने पास ही रखता है। या फिर किसी दीवार पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाना या एक बैंक मैनेजर का बैंक की ही प्रॉपर्टी में रहना, ये सब सिर्फ टेम्पररी परमिशंस हैं, which means they are licenses. Section 6. Quick revision summary. Alright, we've covered a lot of important ground today. Let's do a fast revision to lock in those high-scoring keywords. ये 5 पॉइंट्स एग्जाम शीट में दिखने ही चाहिए। नंबर 1, लीज आती है सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें सॉलिड इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। नंबर 2, लाइसेंस है सेक्शन 52 ऑफ द ईजमेंट्स एक्ट, जो बेसिकली सिर्फ एक परमिशन है। नंबर 3, लीज बने भी कैसे, उसके स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स सेक्शन 107 बताता है। नंबर 4, इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क है एक्सक्लूसिव पोजेशन। एंड फाइनली नंबर 5, अपना लैंडमार्क अथॉरिटी केस ICICI वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1999। नाउ मैं आपको एक प्रोवोकेश करने वाला सवाल देकर जा रहा हूं जो डायरेक्टली लीगल इलस्ट्रेशन से है। अगर एक कंपनी रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक वेइंग या ऑटोमेटिक मशीन लगाती है, तो उनका रेलवेज के साथ जो अग्रीमेंट होगा वो टेक्निकली क्या होगा? इज इट अ लीज और अ लाइसेंस? जरा सोच के देखिए, आंसर करके मुझे कमेंट्स में बताइए। लेट्स सी हु गेट्स द कॉन्सेप्ट परफेक्टली। For more such law lectures, subscribe to Ganga Education. Keep studying and see you in the next explainer. वेलकम टू गंगा एजुकेशन। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। You know, if you're gearing up for your LLB exams, judiciary, or even your LLM entrance, understanding the exact legal difference between a lease and a license is literally a make or break topic. आज के इस सेशन में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि देखेंगे कि कोर्ट्स फैक्ट्स को रेलेवेंट सेक्शंस के साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे करेक्ट करती हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, so you'll definitely want to pay close attention to this one. Okay, let's dive into our roadmap for today. We'll quickly be covering 6 things. 1. The ICICI land dispute. 2. Decoding lease versus license. 3. Our step-by-step legal analysis. 4. The Supreme Court precedent. 5. The final verdict and application. And finally, 6. Some crucial exam tips and a quick revision. Alright, starting with Section 1. The ICICI land dispute. Let's look at the facts of our legal mystery. To solve any problem using the IRAC method, you know we first have to nail down the facts. Simple words, mi samjhe to? The state of Maharashtra gave a piece of land in Bombay to ICICI. They signed a commercial agreement back in June 1994. The condition was actually pretty straightforward. ICICI was given exactly 3 years to complete the construction of a building on that specific land. But here's the catch. The formal lease deed? That would only be executed at a future date, specifically after the construction was fully completed. Now, what's really interesting here is the exact wording of the contract itself, because courts, they always look directly at documentary evidence to determine legal rights. Clause 1 of the agreement explicitly stated that during this 3-year construction period, ICICI merely has a license to enter the land and erect a building. Until the actual lease is granted, they are legally considered a, quote, bare licensee. डॉक्यूमेंट में बिल्कुल क्लियर लिखा था। So naturally, a massive legal dispute popped up. यहाँ कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि द 1994 अग्रीमेंट एक्चुअली है क्या। डज इट क्रिएट एन इमीडिएट लीज राइट फ्रॉम डे वन, और डज इट merely grant a license? The stakes here are absolutely huge. Think about it. If it's treated as a lease, ICICI has to pay heavy rent all the way from 1994. But if it's just a license, well, rent is payable only after the building is completed and that final lease deed is officially signed.
we're talking millions of rupees resting on this one legal definition. Moving on to Section 2, decoding lease versus license. Let's look at the law. Okay, so transitioning to the rule part of our IRAC structure, let's break down the Bear Act provisions. इस problem में सबसे important section है Section 105 of the Transfer of Property Act 1882, which defines a lease. Notice the absolute key concept here. It's a transfer of a right to enjoy property. ये एक legal interest transfer करता है, जिसे हम leasehold interest कहते हैं. Conversely, on the other side, we have Section 52 of the Indian Easements Act 1882 defining a license. A license is quite literally just permission to do something on the land which would otherwise be totally unlawful, like trespassing. Crucially, a license transfers absolutely zero interest in the property. So, the core of the matter really comes down to the transfer of interest doctrine. Guys, this is your mega exam keyword. Examiners scan your papers specifically looking for this exact concept. The absolute core legal test is simply this. If an estate or legal interest in the property is conveyed to the transferee, it is a lease. अगर कोई legal interest transfer नहीं हुआ है, तो it remains a mere license. It really is that black and white. Let's move straight into Section 3, our step-by-step legal analysis. We are now fully in the application phase. Exam में बिल्कुल ऐसा step-by-step reasoning लिखना है to score maximum marks. Okay? Step 1. Identify the relationship. ICICI got possession solely for erecting a building. Step 2. Apply Section 105 of the TPA. We know a lease strictly requires a transfer of interest. Step 3. Check the facts against the law. Remember Clause 1? It's strictly limited their authority to just entering the land. Therefore, Step 4. Our conclusion. There is no demise or transfer of any immediate interest in the land whatsoever. You really have to emphasize the difference between a simple right to use and actual legal possession. ICICI was only given restricted permission to use the land to build. The ultimate legal control, that remained firmly with the state of Maharashtra. Just because there's an agreement to create a lease in the future doesn't mean it magically acts as a present lease today. Right, let's look at Section 4, the Supreme Court precedent. Listen, you cannot conclude a strong law answer without solid judicial backing. You need to memorize this citation right here. ICICI versus State of Maharashtra, 1999, Supreme Court of India. इस landmark case के facts perfectly mirror करते हैं हमारे problem question को. In fact, university examiners often lift facts directly from this specific judgment just to test your conceptual clarity. And this brilliantly illustrates exactly what the Supreme Court held. Handing over possession purely for construction with a promise of a future lease absolutely does not convey any present interest in the land. The Supreme Court applied the exact transfer of interest doctrine we just learned and ruled that the occupant is nothing more than a bare licensee. Case closed. Moving to Section 5, the final verdict and its practical application. Reaching the conclusion phase of our IRAC method, it's time for the final answer. When you write your exam conclusion, you should always start forcefully with, therefore the transfer will be... In this specific case, the 1994 agreement is a license, not a lease. ICICI is a bare licensee. Because no leasehold interest was created immediately, the liability to pay rent under a lease arises only after the construction is fully completed and the final deed is officially executed. The state of Maharashtra simply cannot demand lease rent from 1994. Now, why does all this matter outside the classroom? Well, in real-life legal practice, this distinction is massive. It applies directly to disputing lease agreements in commercial real estate, handling messy bank mortgage disputes during construction phases, dealing with property fraud, and simply allowing contractors onto your land without accidentally transferring any ownership rights to them. Understanding this doctrine literally saves clients from massive, unexpected financial liabilities. Finally, Section 6. Let's do some exam tips and a quick revision. I want to make absolutely sure you walk into that exam hall with complete confidence, so jot these tips down. Examining section numbers zarur mention kare. Always pair Section 105 of the TPA with Section 52 of the Easements Act to visually show that contrast to the examiner. Underline key Bear Act words like transfer of interest, bare licee, and right to enjoy. Ye doctrine judiciary exams mein bahut important hai, let me tell you. And of course, frame your answer using the IRAC structure and clearly cite that Supreme Court judgment. Here is a quick revision matrix for you. I highly recommend you capture a mental snapshot of this right now. It perfectly summarizes the core concepts, the relevant sections, the key doctrine, the landmark case, and the final outcome.
Honestly, just visualizing this table for 2 minutes before your exam will bring this entire session right back to your memory. Before we completely wrap up, I want to leave you with this provocative thought to test your learning today. If a family member lets you stay in their empty flat until you find a job, is that a lease or a license based on the transfer of interest doctrine we just discussed? Think about who actually has legal control and whether an actual legal interest is being transferred. Let me know your legal reasoning in the comments. For more such law lectures and problem-solving sessions, make sure to subscribe to Ganga Education. Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.